A very cheerful good morning to all of you. Welcome to the English class. I am Rashmi Kapoor from Lial Public School. So today we are going to start a new topics of English grammar. So today class we will cover two topics as a conjunction and second is compound words. Okay students, so let's start with a conjunction. Yes, a conjunction is a word that is used for joining other words, phrases, or sentences. Yes, I'm talking about a conjunction, which means it's a glue that holds words, phrase, and clauses. Okay, they are also like a connectors. हम conjunction की बात कर रहे हैं. Conjunction क्या होते हैं? जो word और sentence को जोड़ने का काम करते हैं. So conjunction is a word. Conjunction एक word होते हैं that is used for joining other words, जो कि दूसरे words को, phrases को और sentence को जोड़ने का काम करते हैं. तो जो भी words को, sentence को, phrases को, ये also we use as a clauses. हम जो उनको जोड़ने का काम करते हैं वो कौन करते हैं? Conjunction. So student, yes, you know what do here join means? Join means here connect two or more words or two or more sentences, so you can understand the conjunction. So conjunction, you can notice the join. So the conjunction join words and sentences. So here the word you can notice that we use as a conjunction as a we connect two or more words, two or more sentences. So now student, there are the many example of conjunction as and, but, yet, or, because, not, although. So now student, how they connect words, let me give you example. Yes, so first of all, you notice that here are the example given. So here number one is here Neeta and Priyanka are sister. Okay students, so Neeta and Priyanka, so you notice and is here as a connector between Neeta and Priyanka. Okay, so thus the joining two words. So conjunctions क्या है? ये जो conjunction and है, but है, और है. सो जो कंजक्शन एंड बट और जो और होते हैं वो क्या काम करते हैं? दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं. यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी वर्ड्स की बात कर रहे हैं. जो ये कनेक्टर है किसके बीच में? नीता और प्रियंका के बीच में जो कनेक्टर है एंड, ये दो वर्ड को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं. सो दिस इज अ कंजक्शन. इन द सेकंड सेंटेंस, यू एंड आई आर all friends. So here you notice when we write a sentence without a conjunction, you I are all friends, it not seem look good. ये हमको अच्छे से नहीं लगेगा. We will not understand without the conjunction. When you write a conjunction between two words, you and I are all friends, तुम और मैं क्या है? बहुत पुराने मित्र हैं. So you notice that you will understand. So and is here as a conjunction we use in this sentence. So that's why. So here we use as a conjunction. So conjunction is very important to write a sentence. It use yes connect two or more words. Number third is here I work quickly and carefully. So student, you notice that I work quickly, okay, and carefully. You notice in the sentence, if we write a sentence without connectors, without conjunctions, I work quickly, carefully. So you understand this sentence? No, because its sentence don't look good. Okay, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा. So when we understand, we didn't understand. हमको समझ नहीं आया. So here now I connect. I write a connector is here as a and. So I work quickly and carefully. आप देखते हैं ना, जब भी आप काम करते हैं कि आपको खाना और पीना पसंद है. खाना हिंदी में हम बोलते हैं मुझे खाना, I like to eat and drink. मुझे खाना और पीना पसंद है. So here we use conjunction और. Here we use जैसे खाना और पीना हिंदी में हम क्या बोलते हैं? और. So इंग्लिश में हम यूज करेंगे as a and conjunction. Okay. Now next one is here she is poor but honest. Okay, so here we use as a conjunction but. Okay, she is poor, honest. When you write a sentence without a conjunction, yes, she is poor, honest.
So sentence will not understand when we write a conjunction, when we use as a connector between two words, poor and honest. That's why we understood the sentence, she is poor but honest. So student, so in this conjunction topic, we will discuss only 3 conjunction. This will come in your board exam as a and, but, or. So now student, let's start from the sentences. So how they join sentences. Okay, so now examples are given here. Virat is a good batsman. Second sentence, Ajay is a good batsman. So now student, first we will see sentences example without using conjunction. So here are the 2 examples. Here we don't use a conjunction. हमने conjunction use नहीं किया. This example without using conjunction. So now here are the 2 separate sentences, both giving information about 2 batsmen and their quality. So we can join them with and make one sentence. Virat and Ajay are good batsmen. So Virat क्या है और Ajay भी क्या है, good batsmen है. So here you can notice that how to sentence convert one without affecting the meaning. Okay student, so now next here you can notice the man is poor, the man is honest. The man is poor but honest. Here in the example you notice there are the 2 separate sentences. As a man is poor, man is honest. So you have to write only one sentence using connectors. So here man is poor but honest. So but is used a different I use as okay students, so man is poor but honest we write in one sentence, but make the sentence easy to write without changing the meaning. अब आपको समझ में आ गया है कि हमने इसका मीनिंग चेंज करते हुए हमने इसको एक ही सेंटेंस बना दिया और वो आपको समझ भी आ रहा है. So this is here we use as a conjunction. So student, I hope you all have understood here we use as a conjunction and a but in as a we use as a conjunction to join 2 or more words, 2 or more sentences. Now here, so you notice that there are only 3 conjunction and, but, or. So we discuss one by one. So how to use conjunction, where we use and, where we use or, where we use but conjunction. Okay students, so let's start from and. Yes, and conjunction is used to join words and sentences that have related or similar ideas. देखिए जो conjunction and है वो 2 words को, 2 sentence को आपस में जोड़ने का काम करता है, लेकिन 2 sentence के बीच में, 2 words के बीच में क्या होना चाहिए, similar idea होना चाहिए. एक ही जो sentence है similar idea है, so here we use as a and conjunction. Second one, the conjunction or is used words and sentence in order to show choice. जब भी हमको कोई भी choice show करनी होती है तो हम use करते हैं और conjunctions. जैसे I am giving you example, would you prefer tea or coffee? आप क्या prefer करेंगे, tea या coffee? So here we use as a conjunction or. Okay, now next one is here but. The conjunction but is used to suggest or contrast. जो कंजक्शन बट है उसके हम कहाँ पर यूज करेंगे, किसी का सजेशन देने के लिए. या कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मीन्स क्या होता है, डिफरेंट अपोजिट आइडियाज होते हैं. तो हियर वी यूज एज अ बट कंजक्शन, द मैन इज पुअर but honest. तो in this sentence you notice he we use as a but conjunction. आदमी गरीब है, गरीब के साथ क्या है वो अपोजिट आइडिया है, honest भी है, ईमानदार भी है. So here we use as a but conjunction. Okay, so now let's start one by one. Now, and you notice and conjunction is used to join words and sentences that have related or similar ideas. जब हम and conjunction use कर रहे हैं तो आपको पता है कि 2 words या 2 sentence को हमको join करने के लिए and conjunction use करेंगे, लेकिन one more important thing is here you have to notice that we have to relate or similar ideas. आपको similar ideas जो भी होंगी उससे जो relate ideas होंगे उसी में ही आपको and conjunction use करना है. Now giving you example,
number one is here, most people work in a day and sleep at night. So here we use as a and conjunction to join the two sentence. देखिए two separate sentences I am writing, and two separate sentence. Most people work in a day. Most people work in a day and most people sleep at night. There are the two sentences and we make a one sentence. Most people work in a day and sleep at night. So we made a sentence, we make a one sentence, easy to write without changing the meaning. इसका meaning change करते हुए हमने उसे लिख दिया. So हमने क्या use किया इसके अंदर? हमने as a conjunction, हमने as a connector use किया. So this is a trick. कनेक्टर को आप किससे हम समझेंगे? एज अ ग्लू. आपको पता है ना ग्लू का काम क्या होता है? होल्ड टू थिंग्स, जो दो चीजों को जोड़ती है. कंजक्शन इज जस्ट लाइक अ ग्लू, जो दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ती है. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ कंजक्शन. हियर वी यूज एज अ एंड. नाउ सेकंड सेंटेंस, शी बॉट अ शर्ट एंड अ बुक. ओके, सो शी बॉट अ शर्ट, उसने बॉट करी शर्ट भी और बुक की. So when we write the sentence, she bought a shirt, she bought a book. So when we write a one sentence without changing a meaning, so she brought a shirt and a book. Okay. Now next sentence is here. His favorite snacks are cakes and biscuits. So his favorite snacks क्या है? देखो similar ही idea है, similar things है. So here we use and conjunction. तो देखिए उसके फेवरेट स्नैक्स क्या हैं? केक्स भी हैं और बिस्कुट्स भी हैं. सो नो नोटिस व्हेन वी राइट टू सेंटेंसेस, हिज फेवरेट स्नैक्स इज केक, हिज फेवरेट स्नैक्स इज बिस्कुट. So here we write, make one sentence without changing a meaning. His favorite snacks are cakes and biscuit. So you notice here we use and conjunction to join two sentences and without changing its meaning. Okay, student. So here this is a oral about the and conjunction. Now next is here as a but conjunction. So let's start where we use as a but conjunction. Okay, now conjunction but is used to suggest or contrast. देखिए जो कंजक्शन बट है वो किसके लिए यूज करते हैं हम? सजेस्ट और कंट्रास्ट के लिए. कंट्रास्ट का मतलब हमारे जो भी अपोजिट आइडियाज होते हैं, here we use as a but conjunction. Okay, now for example, he is poor but honest. अब देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर हमने and यूज नहीं किया. Why? Because it not have a similar ideas, it has a contrast in this sentence. You notice he is poor बट ऑनेस्ट. वह पुअर है लेकिन साथ में ईमानदार भी होता है. कई बार हमारे जो दिमाग में आइडिया होता है कि वो पुअर है लेकिन वो ऑनेस्ट नहीं होगा. सो हियर द कंट्रास्ट शो इन द सेंटेंस दैट ही इज पुअर बट ऑनेस्ट. नाउ सेकंड सेंटेंस, द स्टिक वाज थिन डैश इट वाज स्ट्रॉन्ग. देखिए द स्टिक वाज थिन, तो द स्टिक अगर थिन है, ओके, लेकिन क्या है? वह स्ट्रॉन्ग है. लेकिन हमको कई बार लगता है कि अगर स्टिक, जो भी लकड़ी थिन है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, लेकिन क्या है? वो स्ट्रॉन्ग है. तो अपोजिट आइडियाज है. सो हियर वी यूज एज अ बट कंजक्शन. नेक्स्ट वन इज हियर, इट वाज अ सनी डे but the wind was cold. Okay, so this is a contrast in this sentence. Okay, you notice it was sunny day. Sunny day means बहुत तेज धूप है, sunny day है ना? लेकिन wind was cold. So how wind was cold? Wind कैसे cold हो सकती है? दिन तो बहुत ही गर्म है लेकिन wind क्या है? ठंडी है. तो wind को भी क्या होना चाहिए? गर्म होना चाहिए. But the contrast is here in this sentence. So here we use the but conjunction. Okay, so you notice that conjunction where we use but conjunction. Okay, so but conjunction, we use but conjunction to show contrast or suggest. Okay, so you notice that stick was thin but it was strong. So okay, the stick क्या है? Thin है लेकिन क्या है? वो strong है. Now next sentence, it was a sunny day and but the wind was cold. Sunny day तो है लेकिन wind क्या है? Cold है. So here you notice that they are the two opposite ideas. So here we use as a but conjunction. Okay. Now
Next is here or conjunction. Okay, student. So where we use or conjunction. So let's start. The conjunction or is used to join words and sentences in order to show choice. जो हम बात कर रहे हैं और कंजक्शन की, वो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए या दो से ज्यादा दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज आता है. देखिए, आई एम गिविंग यू एग्जांपल. यू कैन राइट योर पेपर विद अ पेंसिल और अ पेन. ओके, आई एम गिविंग यू अ चॉइस. मैं आपको चॉइस दे रही हूँ. तुम अपना पेपर क्या कर सकते हो? विद अ पेंसिल, अपनी पेंसिल से लिख सकते हो. ओके, या पेन से लिख सकते हो पेपर पे. तो अब देखिए, मैंने आपको चॉइस दी है पेंसिल या पेन की. सो हियर वी यूज एज अ और कंजक्शन. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर. वुड यू प्रेफर कॉफी और टी? आपको क्या पसंद है? कॉफी पसंद है या टी पसंद है? सो आई एम गिविंग यू अ चॉइस. मैं आपको चॉइस दे रही हूँ. आपको पसंद क्या है? कॉफी है या टी है? सो हियर यू नोटिस दैट वी यूज एज अ और कंजक्शन टू शो चॉइस. जब भी हमारे पास चॉइस आएगी तो हम यूज करेंगे एज अ और कंजक्शन. क्लियर? नाउ images are given here. You can see the image. Now in this image, first one is here, we can eat pizza. Okay, now in the second image we can eat burger. So here the choice are here, we can eat pizza or burger. हम पिज्जा खा सकते हैं या बर्गर खा सकते हैं. तो choice is yours, तुम्हारी choice है. So here we use as a or conjunction. जहां पर choice use करते हैं वहां पर और conjunction हम use करेंगे. Okay, now next, let's start the exercise. Okay, fill in the blanks with an, but or whichever is suitable in the sentences given below. देखिए, हमको क्या यूज करना है? एंड, बट और कंजक्शन करना है जहां पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग सुटेबल हो. सो हियर आर द एक्सरसाइज रिलेटेड टू योर बुक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, शिवम डैश नितिन व स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th. हम बात कर रहे हैं शिवम और नितिन की कि वो क्या है? स्टूडेंट हैं क्लास 5th के. तो हियर यू नोटिस वी यूज एज अ एंड कंजक्शन. व्हाई वी यूज एज अ एंड कंजक्शन हियर? बिकॉज सिमिलर आइडिया है. कोई अपोजिट आइडिया है? नहीं है. कोई और चॉइस है? नहीं है. सो हियर वी यूज एज अ एंड कंजक्शन. ओके, नाउ सेकंड, all of his friends go to school daily dash he doesn't go there. देखिए, उसके सारे दोस्त स्कूल रोज जाते हैं, लेकिन he doesn't go there, लेकिन वो वहां नहीं जाता. वहां किसकी बात हो रही है? स्कूल की बात हो रही है. तो अपोजिट आइडिया है कि उसके फ्रेंड्स तो स्कूल जाते हैं, वो नहीं जाता. तो अपोजिट आइडिया. तो हियर वी यूज एज अ बट कंजक्शन. ओके, डोंट राइट हियर एज अ एंड कंजक्शन. एंड कंजक्शन होगा तो आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. व्हाई? because and conjunction is used for similar ideas. हम similar ideas के लिए हम and conjunction use करते हैं. Now third one is here, that is a great idea dash you are so talkative. ये एक बहुत ही महान आइडिया है कि क्या कि तुम you are so talkative. Talkative means क्या होता है? बातूनी, तुम बात करते हो. Now here we use as a but conjunction. Okay, so here are the opposites. as a suggestion भी दे रखा है. So this is a great idea. But you are so talkative. लेकिन तुम क्या हो? Talkative हो. So here we use as a but conjunction. Number 4, he returns home and decides to go to school daily. वो घर आया और उसने निश्चय किया स्कूल जाने का. तो देखिए, हमने क्या किया? एक ही सिमिलर आइडिया चल रहा है कि वो क्या हुआ? घर आया और स्कूल जाने का निश्चय किया. We don't use as a but conjunction here. So here we use as a and conjunction. Clear? Now number 5. मुशक राज was happy dash pleased with गजराज. तो मुशक राज बहुत हैप्पी हुआ and please मतलब खुश हुआ. Please also means here as a means happy with गजराज और गजराज से खुश हुआ. So here we use as a and conjunction. Okay, now number 6 is here. We don't think whether our household activities are our jobs or not. हम ये नहीं सोचते कि वेदर अवर जो हाउस होल्ड ड्यूटीज, हाउस होल्ड जो एक्टिविटीज है, जो हाउस होल्ड मीन्स जो घर का काम जो हम करते हैं, आर जॉब्स वो हमारा काम है और नॉट क्या हमारा काम है या नहीं. सो हियर जब हमको पता चल रहा है कि काम है या नहीं, सो हियर वी यूज एज अ और कंजक्शन. नाउ नंबर 7, आई टेक राइस and chapatis in my lunch. Okay, so here we write as a and conjunction. Why? Because not other
different idea, not a suggestion here, not a short choice here. So here we use as a and conjunction. I take rice and chapatis in my lunch. Here we use as a and conjunction. Okay, students. So, student, I hope you have understood the conjunctions. So, okay. So we have only studied as a and, but, or conjunctions. Okay, student. So let's start the another topic as a compound words. ओके देखिए हम बात करेंगे कंपाउंड्स वर्ड्स की। तो कंपाउंड्स वर्ड्स क्या होते हैं? ओके सो यू नोटिस एज टू वर्ड्स पुट टुगेदर टू मेक अ न्यू वर्ड। हम बात करते हैं कंपाउंड वर्ड की। कंपाउंड मतलब दो से मिले हुए वर्ड, दो से मिले हुए शब्द। देखिए टू वर्ड्स पुट टुगेदर, जब हम दो वर्ड्स को साथ में रखते हैं, टू मेक अ न्यू वन, क्या करते हैं? नया वर्ड बनाते हैं। तो दो डिफरेंट वर्ड हैं, उनको हम साथ में रखेंगे तो क्या बनाएंगे? एक डिफरेंट वर्ड बनाएंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड। देखिए फॉर एग्जाम्पल रेन प्लस बो। ओके रेन इज हियर एज अ सेपरेट वर्ड, रेन आपको पता है रेन मीन्स बारिश। एज अ बो इज हियर, बो आपको पता है बो मीन्स एज अ तीर हम बात करते हैं। सो हियर we combine two words, we join two words and make a one word, rainbow. Okay students, so I hope have cleared the compounds words. So compound word is formed by joining two words together. जब हम दो words को आपस में join करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? Compound words. Okay, now next example is here of a compound words, sunflower. You can see the image sunflower. Make one word as we compound the two words sunflower. Okay, so sunflower. So here we write a word sunflower, make a new word. Next is here rainbow. So okay student, rain is here and bow. Bow here you notice, you can see the image, make another word meaning as a rainbow. Next is here pineapple. So pine is here, you notice the image, and apple is given here. So we make a new word pineapple. We join the two word as we make a one word pineapple. Okay student. Now next is here bookshelf. You make a one word as a bookshelf. Okay, you notice book is a separate word and shelf is the other as a separate word. Okay, so compound words is formed by joining two words together. हमने जब join किया two words को, here we make a one word. This is a compound word. Yes, next word is here foot. You can notice, you can see the image foot, and next one is here ball. So here you notice as a football. Okay students, so here this is another compound word. Now next image is given here. Yes, lipstick. To make a word lipstick. Okay, next is here mail. Here next word is here box. So mail box. Okay, now next is here fish. Okay, next देखिए ball, हम देख रहे हैं fish ball. तो here make a one word as a compound word fish ball. Now next one is here butterfly. So here butter is here separate word, fly is the other word. So we make a compound word butterfly. Okay, next one is here basket. Next is here word ball. So make a one word basketball. So you notice that the students a new word formed by joining two words. जो भी new word बन रहा है वो क्या कर रहा है? दो words को join करके बन रहा है. So that's why it is called a compound word. Now next one is here toothbrush. Okay, so here you notice, you can see the image as a toothbrush. Okay, so this is all your, as you notice, this is a compound words. Now next image is given here toothbrush. Okay, so here this is a toothbrush also image given here. Next is here snow plus man. Here make a one word snowman. This is a compound word snowman. Okay, now next is there arm plus chair. So arm is here as a separate word, chair is as a separate word. So we join two words together, make a different word, make a compound word armchair. The meaning is different. Yes, you notice the student armchair.
Okay, so it has a different meaning. Arm is here as a different meaning, chair has a different meaning, and we make a two word together and make a new word as a compound word, make a different meaning, armchair. Okay, now here you notice that some important compound words of your textbooks are as follows. हम बात कर रहे हैं कि कुछ कंपाउंड वर्ड्स आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें से दिए गए हैं, क्योंकि यू नो वेरी वेल दैट्स इन योर एग्जाम. सो वर्ड्स आर गिवन, वर्ड्स आर दिए गए होंगे आपके पेपर में, जिसमें आपको बताना होगा, या तो आपको वर्ड दे रखे होंगे उसको सेपरेट करना होगा, या सेपरेट वर्ड दे रखे होंगे आपको उसे कंपाउंड वर्ड बनाना होगा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. Someday. So here we separate the word some plus day. Next one, classroom. So class plus room, classroom. Number third is here newspaper. So we separate the word news plus paper. Number fourth is here handmade. So you notice hand plus made. Number fifth, playground. You notice the word play and a different word, and the ground is here and the separate word, we make a one word, playground. Number 6 is here dustbin. Dust plus bin, dustbin. Number 7th is here magic lamp. Magic plus lamp, here you notice magic lamp. Number 8, homework. Home plus work, homework. Number 9th, bed sheet. Bed plus sheet. Number 10 is here note plus book, notebook. Okay, you notice the compound words have joined two words to make a new word. Okay. So now this is another exercise. So you have to match column A to column B to form meaningful compound word. अब आपको column A को column B से match करना है. कैसे? जो आपको meaningful compound word बने. So let's start. Number 1, over. So here we joined next word as a overcome. So we make a word overcome. Next one is here flower. So flower, second word is here in the matchup as a flower bed. Number third is here bed. Okay, so you have to match E, bed sheet. Number fourth is here show. Okay, so show number हम मैच करेंगे बी कॉलम से. So show. Okay, showroom. Number 5th is here sun. So we have to match number C as a sun rays. Number 6th is here fire. So fire is here. We compound the word firecrackers to make a one word firecrackers. Number 7 is here magic is a separate word, and we match a word to make a meaningful word, magic lamp. Okay, number 8 is here mother. So here you notice mother land. So we match the G, land, motherland. We make a compound word, motherland. Okay, so here you notice that we make a compound word. So it has another meaning. Overcome, flower bed, bed sheet, showroom, sun rays, firecrackers, magic lamp, motherland. Okay, student. Now, so I hope you have understood the compound words. Now, let's start the exercise. So this type of exercise will come in your board exam. So exercise will come as a different types, as a matchup form, as a fill-up form. Okay, student. So student, you notice that the box are given here, and in the box and clues are also given here. Okay, so you have to join the clue with a word and make a meaningful word. Okay, student, let us start. Fill in the blanks using appropriate words from the box. अब आपको क्या करने हैं? Fill in the blanks दिए गए हैं, आपको उसमें appropriate words क्या करने हैं? आपको use करने हैं. Number 1, I threw the bits of paper in the dust. अब हम लोग को नोटिस करना है कि dust के साथ हम कौन सा ऐसा word हम join करें तो उसका meaningful word बने. So here we joined a word bin. Dustbin, make a new word, dustbin. So I threw the bits of paper. मैं फेंकता हूँ bits of paper, जो भी आपका जो पेपर का जो छोटे छोटे
टुकड़े होते हैं मैं कहाँ फेंकता हूँ? डस्टबिन में. So make a new word, dustbin. Now next one. Second sentence, the cob dash is on the wall. So here you notice the cob. So match करना है हमको as a दूसरा word लेके as a meaningful आपका word बनना चाहिए as a compound word. So cobweb. Cobweb means क्या होता है बच्चों? मकड़ी का जाला. So cobweb is on the wall. Number third is here. We use hand dash paper, arms and marks on दशहरा. तो हम दशहरा पर क्या यूज करते हैं? हैंड मेड पेपर, आर्म्स एंड मार्क्स. हम आर्म्स बनाते हैं, उसकी मार्क्स बनाते हैं. यू नोटिस हियर वी यूज एज अ हैंडमेड पेपर. सो हैंड एंड प्लस मेड वी मेक अ न्यू वर्ड हैंडमेड. नंबर फोर्थ इज हियर. वी शुड बी डिसिप्लिन एट आवर होम. हमको अपने घर पे क्या होना चाहिए? एट हर वर्क प्लेस. हमको हमारा जो वर्क जो प्लेस है वहां पर डिसिप्लिन में रहना चाहिए. So work here we plus as another word as a place. So make a new word, workplace. We should be disciplined at our workplace. Number fifth is here. We all do our home dash ourselves. So you notice this is line fit for you. Okay, ये आप सबके लिए fit हो रही है ना? So we all do. हम सबको करना चाहिए our home work ourselves. अपने आप को ही हमारे स्वयं को ही अपना होमवर्क करना चाहिए. तो best suitable word is here work, homework. Okay. Number 6 is here. Whenever someone rubbed the magic dash, the genie used to come out. Yes, everybody know about this magic lamp. So here we suit the word as a lamp. Make a word, compound word, magic lamp. Okay, student. So whenever someone rubbed the magic lamp, जब कभी कोई magic lamp को rub करता है, the genie used to come out. तो genie क्या होता है? उसे बाहर आता है. Okay. Number 7 sentence. Okay. We shall make our class dash clean. हमको सभी को अपना जो क्लासरूम है वो क्लीन रखना चाहिए. So one word is here class plus we use word room. So make a meaningful word classroom. So we will make a classroom clean. Yes, it is your duty. It is क्या है? सभी की ड्यूटी है कि हमको अपना जो क्लासरूम है वो क्लीन रखना चाहिए. Okay, students. So this is all about your compounds words. So now let's practice again the compound words. Yes, warm-ups. Let's revise what we have learned about the compound words. A compound words is formed when two or more words are linked together to form new word with a new meaning. Compound words वो होते हैं जब हम दो या दो से अधिक शब्द को एक साथ लिंक करते हैं, एक साथ जब जोड़ते हैं और नया वर्ड बनाते हैं जिसका एक अलग मीनिंग होता है, न्यू मीनिंग होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड. देखिए कंपाउंड वर्ड्स में देखिए अब you can notice here as a image are given here as the flower, next image are given plot. We make a one word flower pot. Okay, next image is given here sun, next image glass. So we make a one word sunglasses. A new meaning is here sunglasses. Sunglasses का means sun नहीं होता, sunglasses का means glasses नहीं होता. So here we join two words together to make a new word as a compound word. Next one is here star. Okay, you can see the image star. Next image is given here fish. So one word is here as we make a compound word starfish. Now student, next word. Yes, seen. Next word is here bow. Okay, so here you notice we make a new word rainbow. Next is here cup. And next image is given here cake. So make a compound the word cupcake. You notice you can see the image cupcake. They had another meaning. Okay, snowman. Snow is here given. Image are given here snow. Next image are given here as a man. So you can notice the image of snowman over here. Snowman. Okay. Now next image are given here. Yes, two little words that come together to make a new word. दो छोटे शब्दों को हमको join करना है और नया word बनाना है. Okay, rain plus coat.
raincoat. Next is here pan plus cake, pancake. Next is here ear plus ring, earring. Now next is here snow plus man, snowman. Next is here cat plus fish, catfish. Okay, so you can notice the image as a catfish, snowman, earring, pancake, raincoat. So you notice that in this way, the new word formed by joining two words is called a compound words. I'm giving you another example as a wonderful. Okay, wonderful. Playground, play plus ground, playground. Auto rickshaw. You notice the auto rickshaw. Auto as other word. Rickshaw is also other word. We joined a two word as a. We make a one word auto rickshaw. Okay. Next word is a chatterbox. Okay. Chatter plus box is here. So here we make a word chatterbox. Chatterbox means क्या होता है? As a talkative, बातूनी, बहुत बात करने वाला. Okay. Now next word is here as a someday. Someday as a we use as a some. Some के लिए हम कुछ के लिए use करते हैं. Day के लिए आपको पता है दिन. So we make a word as a someday.